Hi students. Today we will be talking about the fallopian tube, which is called as uterine tube or the salpinx. This is the part 2 lecture of the female genital organs. The uterine tube, इसकी लेंथ जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स होती है और इसका डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 1 mm right up to 4 mm. The highest diameter is found in the ampulla जहाँ पर fertilization होता है. Fallopian tube जो है, it is a very important tube which connects the ovaries with the uterus. Ova को after ovulation इन्फंडिबुलम से यूट्रस तक लेकर आने का काम फैलोपियन ट्यूब करती है और स्पर्मेटोजोआ को यूट्रस से एम्पुला तक फर्टिलाइजेशन के लिए लेके जाने का काम भी फैलोपियन ट्यूब करती है. ये टॉशेस होती है और इसके अंदर दो ऑस्टियम्स होते हैं, मतलब दो ओपनिंग्स होती है. एक ओपनिंग जो होती है वो एब्डोमेन के अंदर ओपन होती है जिसको हम एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं, जो इन्फेंटिबुलम के पास होती है फिमरिएटेड एंड पे, लैटरल वॉल में, लैटरल पार्ट पे. और एक होती है जो यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है जिसको हम यूट्राइन ऑस्टियम भी कहते हैं. ये दोनों का जो ओपनिंग है, एब्डोमिनल ऑस्टियम का जो ओपनिंग है वो 3 mm डायमीटर का होता है और जो यूट्राइन ऑस्टियम जो होता है, जो यूट्रस के अंदर ओपन होती है, उसका डायमीटर तकरीबन 1 mm का होता है. और इसके 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ द लैटरल मोस्ट पार्ट जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं और ये फिमरिएटेड एंड होता है. आई विल शो यू ऑन द डायग्राम व्हेन आई एम टॉकिंग मोर इन डिटेल्स. द सेकेंड पार्ट फ्रॉम लैटरल इज द एम्पुला. So you have the infundibulum, the ampulla, the isthmus and the intramural or the interstitial. Yeah. So let's talk about the uterine tube. See, it is also called as the fallopian tube or the salpinx. Now this is a tube which is responsible for the transport of the spermatozoa from the uterus to the ampulla. In ampulla, the fertilization takes place and it transmits the oocytes from infundibulum to the uterus. Okay, so if we see, this is the fallopian tube, okay, this is the uterus and this is the fallopian tube. So the transmit from this is one end and this is one end. So this part is called as the uterine ostium. It is called as the uterine ostium, and this opening, which is the fimbriated end, is called as the abdominal ostium. The size, the diameter of this abdominal ostium is 3 mm and the uterine ostium is 1 mm. Now the fertilization takes place in this part, that is the ampulla. So to talk about, the total length of the fallopian tube is 10 centimeters, okay, with an average diameter between 1 to 4 mm. The largest diameter is of the ampulla, which is 4 mm. So let's see the parts of the fallopian tube. If you see the fallopian tube, it is divided into 4 parts. The first is called as the infundibulum. The second is the ampulla. Third is called as the isthmus. And the fourth is called as the intramural or interstitial part of the fallopian tube. Now the infundibulum is this part. This part is called as infundibulum, which has a fimbriated end. It's funnel shaped, okay, and it has fimbria. One fimbria is elongated and it is attached to the ovaries. This is called as the ovarian fimbria.
This is called as the ovarian fimbria, and when ovulation takes place, the ovum is released, and through the ovarian fimbria it reaches from the abdominal ostium into the infundibular part, and from infundibular part it goes to the second part, which is called as the ampulla. This is the ampulla. This ampulla is tortuous, dilated, and measuring approximately 6 to 7 centimeter with a diameter of 4 mm. The third part is the isthmus. This part. This isthmus is narrow, cord-like, and measures approximately 2 to 3 centimeter with an average diameter of 2 to 3 mm. And the fourth part is this one, which is called as the intramural or ischial part. Why it is called as ischial or intramural part is, see, if you see the uterine wall, this is the fallopian tube, this is the uterine cavity, got it? So the part which is between this, within the uterine wall, is called as the intramural part. This is approximately 1 centimeter, and this is the uterine ostium, which is having a diameter of 1 mm. Supply of the uterine tube. The blood supply of the uterine tube दो तरीके से होती है. एक है यूट्राइन आर्टरी और दूसरी है ओवेरियन आर्टरी. यूट्राइन आर्टरी जो होती है ये अप्रॉक्सीमेटली मीडियल 2/3 को सप्लाई करती है, और ओवेरियन आर्टरी जो है वो लैटरल 1/3 को सप्लाई करती है. जो वेन्स है वो इन्हीं के पैरेलल चलती है, और ये ड्रेन करती है वेन्स पैम्पनिफॉर्म plexus of ovaries. Pampiniform plexus of ovaries, जो अल्टीमेटली ओवेरियन और यूट्राइन वेन्स में ड्रेन हो जाती है. नर्व सप्लाई जो है ये दो तरीके से होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक जो है nerves, they are derived from T10 to L2 segments and are derived by the hypogastric plexus. These are said to be vasomotor and they stimulate the tubal peristalsis. तो सिंपैथेटिक का मेन फंक्शन जो है वो वैजोमोटर होता है और स्टिमुलेट करती है वो ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस. बट ही ऑल्सो सेड कि ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस इज बेसिकली अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, बट इट इज बिलीव्ड दैट इवन सिंपैथेटिक and hormonal control both are responsible for the tubal stimulation. The parasympathetic nerves are derived from the vagus, from the pelvic splanchnic nerves, from S2, S3 and S4. ये nerves जो है ये medial half को सप्लाई करती है और ये inhibit करती है peristalsis को, and it produces vasodilatation. It produces vasodilatation. So sympathetic is stimulant to the tubal peristalsis. Parasympathetic produces vasodilatation and it inhibits the peristalsis. फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब्स की जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, इसके अंदर दो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज़ द सल्पिंजाइटिस
tubal blockages, which is responsible for the sterility and tubal pregnancy and tubectomy. Salpingitis is basically the inflammation of the uterine tube. It is the inflammation of the uterine tube. Sterility plays a very important role in the females. अब क्या है कि sterility जो है, that is inability to have a child, is called as sterility. That means a female should be fertile. So if there is a history of marriage 5 years, 7 years or more than that, and then there is a complaint that the female is not being pregnant, so one of the cause in the female could be tubal blockage. To check this tubal blockages, we have to go for patency test, and this is done by two methods. One is called as insufflation test and one other is called as hysterosalpingography. इंसफलेशन टेस्ट को रूबिन्स टेस्ट भी कहते हैं और हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी. There is one more test which is now done, that is called as by laparoscopic test. So what is insufflation test? Normally air is pushed into the uterus, it passes through the tubes and leaks into the peritoneal cavity. And this leakage produces a hissing or bubbling sound which can be auscultated over the iliac fossa. So if this is the uterus and this is the fallopian tube, with the help of a cannula or a tube, the air is passed into the uterus. The air leaks inside the pelvic cavity, and here a stethoscope is kept on the abdomen and the sound is heard as a hissing or bubbling sound. If the sound is heard, that means that it is patent. The second test is called as hysterosalpingography. It is with the help of a radiological technique by which the cavity of the uterus and the lumina of the tubes can be visualized. So a radio opaque liquid or solution or a dye is passed within the uterus and an X-ray or radiological images are taken, and then slowly we come to know that the spill of this radio opaque has been completely evacuated, and that is how we come to know that the tubes are patent. And the third test is the laparoscopic examination, by which we have a direct view. The most important benefit of laparoscopic examination is कि उसके ज़रिए अगर कोई स्मॉल प्रॉब्लम हो या हमारे को अगर डायग्नोस्टिक हेल्प लेनी, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेनी है कोई टिश्यू की, तो हम इमीडिएटली वी कैन टेक अ बायोप्सी ऑफ दैट, वी कैन एग्जामिन, एंड इफ देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर और सम स्मॉल ब्लॉकेजेस वी कैन इवन ट्राई टू रिलीज इट. सो दिस इज़ अ वेरी बेटर. नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है, फर्टिलाइजेशन जैसे हमने वो देखा कि एम्पुला में हो गया, फिर फर्टिलाइज जाइगोट जो है वो आता है और यूट्रस के फंडस के पोस्टीरियर पोर्शन में जाके इम्बेड हो जाता है और वहाँ पे ग्रो होता है. बट समटाइम्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इंस्टेड ऑफ रीचिंग द यूट्रस अदर्स टू द वॉल ऑफ द यूट्राइन ट्यूब एंड स्टार्ट्स डेवलपिंग हियर. This is called as tubal pregnancy. It is one category which is also called as ectopic pregnancy. Ectopic का मतलब होता है कि anything which is away from the normal. Okay, अब ectopic pregnancy का most common site is the tubes, but it can even occur inside the abdomen,
ओके। सो एनीथिंग अवे, द प्रेगनेंसी जो यूट्रस से हटकर है, नॉर्मल एरिया से हटकर है, उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन इज द ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द ट्यूबेक्टोमी। Now, for the purpose of family planning, a woman can be sterilized by removing a segment of the uterine tube on both the both the sides. So, if this is the tube, this portion of the tube is cut, okay, and this is ligated here. Now, this is called as tubectomy. So, these are important clinical features. Okay, so clinical anatomy हमारा हो गया। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसकी साइज, उसकी लेंथ और उसका ब्लड सप्लाई और उसकी नर्व सप्लाई, दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ रिमेंबर कि क्वेश्चंस जो है यूजुअली जो आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, मैं यूट्रस का भी थोड़ा बताऊंगा कि जस्ट एक्सप्लेन द पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द यूट्रस, दिस कैन बी वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी दैट व्हाट आर द सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो तुमको याद रखना है एक्टिव and mechanical support, okay, muscular and fibromuscular support, ये तुमको याद रखना है। Then the questions which can come in fallopian tubes are के what is the length, what are the parts of the fallopian tube, explain. The second question which can come most commonly in fallopian tube is the clinical anatomy. तो ये जो चार चीज़ें हमने देखे, salpingitis, tubal pregnancy, tubal blockages with patency, insufflation test or Rubin's test, hysterosalpingography and laparoscopy examination. Okay, ये चीज़ आपको उसके अंदर लिखना है इन डिटेल्स। अगर कोई डाउट्स है या अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू मी ऑन योर कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, और यू कैन सेंड मी बाय योर मैसेज डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। My number of WhatsApp is 9028 303662. Thank you very much. Hope you will understand, and thank you very much.